Beta ji. Today we will be starting with the next part of our vibrations, that is damped vibrations. To start with this part, again I will continue with the same example जो मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था regarding free vibrations, जिसमें हमने assume किया था कि one child was there and initially he or she was taught to do how to do the work, and accordingly he keep on doing the work even after the resistive forces are there. He is assuming that there is no resistive force, और वैसी वाली vibrations को हमने relate किया था किससे? Free vibrations से. And then we define those free vibrations as these are the vibrations, periodic vibrations which happens in the absence of any resistive force. उसी example को I am going to continue with that. Example में अभी मैं जो modification करके बता रही हूँ, just listen to that carefully. हमने assume किया कि किसी बच्चे को initially उसके parents ने सिखा दिया है कि आपको ऐसे ऐसे करके रोज काम करना है. But now generally what we people are doing, जब भी कोई बच्चा घर से आता है, suppose मैं ही बच्चा हूँ और मैं स्कूल से घर वापस आई, तो पहले मैं थोड़ी देर टीवी देखूंगी या खुद को फ्रेश अप करूंगी and then I want to do my work. बट जनरली बच्चे अपने आप से काम नहीं करते. एक बार उसके मम्मा या पापा या घर में कोई भी बड़ा उनको बोलना पड़ता है बेटा स्विच ऑफ द टीवी और काम पर बैठ जाइए. तो वो एक फोर्स होती है बॉडी को वापस से इक्विलिब्रियम में लाने के लिए चाहिए, मींस वापस से उसको काम पे लाने के लिए उसको चाहिए होती है वो फोर्स, ताकि एक बैलेंस बना रहे. उस फोर्स को हम यहाँ पर मानकर चलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स की तरह. तो मम्मा ने बोला उसको कि बेटा आप काम करिए एंड द चाइल्ड स्टार्टेड वर्किंग देयर. फिर इतनी देर में बाहर से किसी फ्रेंड की आवाज आ गई या मम्मा ने ही टीवी ऑन कर लिया मूवी देखने के लिए, तो वो वाली फोर्सेस उसके लिए रेजिस्टिव फोर्स का काम करती हैं. एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज रेजिस्टिव फोर्सेस चाइल्ड कंसंट्रेट नहीं कर पाता एंड स्लोली एंड स्टेडीली थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो अपनी नोटबुक साइड में छोड़ता है और बोल के जाता है मम्मा मैं भी खेल कर आ रहा हूँ, आके काम करूंगा. मींस जो वाइब्रेशंस काम करने के लिए उसके माइंड में प्रोड्यूस हुई थी, अल्टीमेटली रेजिस्टिव फोर्सेस की वजह से वो क्या हो गई, डिक्रीज, जीरो हो गई और वो खेलने के लिए बाहर चला गया. सो डैम्प्ड वाइब्रेशंस आर दोज काइंड ऑफ वाइब्रेशंस. डैम्प्ड वाइब्रेशंस आर द पीरियोडिक वाइब्रेशंस. These are the periodic vibrations produced by a body in the presence of any resistive or external force. Means if any resistive force is there, any external force is there, whatever periodic vibrations are produced by a body, that are known as damped vibrations. Why are we saying these vibrations as damped vibrations? Because after some time, due to the presence of these resistive and external forces, the amplitude of these vibrations will become zero. The frequency of vibration changes and the graph of these vibrations can be drawn this way now. If this is displacement and this is time, so the graph for damped vibrations is shown this way. In this you are easily able to see the amplitude. Initially the amplitude was larger and then it ceases to almost zero. The amplitude will become zero. Why amplitude becomes zero? Because external forces are acting over there. अब external forces का फर्क क्या पड़ा? Suppose बच्चे को बाहर खेलने वाले बच्चों की आवाज सुन रही है, अब वो अपनी जितनी भी एनर्जी थी, जितना वो काम करने में लगा रहा था, अब वो एनर्जी किसको कहाँ लगा रहा था, अब वो एनर्जी लगाने लग गया बच्चों को नेग्लेक्ट करने में. मींस जो रेजिस्टिव फोर्स आ रही है उसको ओवरकम करने के लिए बॉडी अपनी एनर्जी लगाती है. जब बॉडी अपनी एनर्जी लगा रही है तो इनिशियली उसकी वाइब्रेशंस क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी. डैम्प्ड वाइब्रेशन इज दैट काइंड of vibrations only. In this one, initially the vibration, the amplitude is very high. When the resistive forces are acting, suppose this is pendulum, it is vibrating over here. Initially the amplitude is high, ये यहाँ तक और यहाँ तक जाकर आ रहा है. But when the resistance is offered by the molecules, the energy possessed by the pendulum that is used up to overcome this resistive force, and slowly and steadily the amplitude of the pendulum decreases. And these kind of vibrations are known as damped vibrations. Now few lines are there in your book. We are following this Selena book. Few lines are given over here. I want to read out those sentences because these are very important to understand this stuff. Before starting to these lines, I would like to do more things over here. Two forces are acting in case of damped vibration. First one is restoring force. This is the kind of force which brings the body back in equilibrium.
सो मम्मा जब बार बार बोल रही थी बेटा काम कर लो, तो वो एक रेस्टोरिंग फोर्स की तरह काम कर रहा था आपको वापस से वाइब्रेशंस में लाने के लिए, इक्विलिब्रियम में लाने के लिए. सो एक फोर्स काम करता है रेस्टोरिंग फोर्स की तरह से, एंड सेकेंड वन दूसरा फोर्स यहाँ पर कौन सा काम कर रहा है, डेफिनेटली दैट इज resistive force. So in case of damped vibration these two forces are working. In case of free vibrations ये नहीं था, तो means वहां पर कौन सा सिर्फ एक force काम कर रहा था, only restoring force. In case of free vibrations only one force is working, that is restoring force. In case of damped vibration two forces are working, one is restoring force and second is resistive force or external force. Now I am reading with those sentences, please listen to me carefully. The frictional force at any instant is directly proportional to the velocity of the body. Means कितना frictional force वहां पर लग रहा है किसी भी चीज को oppose करने के लिए, ये किसी भी body के velocity पर depend करता है. Suppose अगर आपका बाहर एक ही फ्रेंड खेल रहा है तो you may or may not be bother about that. आप उसको बोल देंगे मुझे अभी नहीं खेलना है, तो आपको ज्यादा एनर्जी यूज नहीं करना पड़ा. बट अगर उस आपके जो खेलने का वेलोसिटी ज्यादा है, उसका इंटेंसिटी ज्यादा है, तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको ओवरकम करने के लिए. तो मींस फ्रिक्शनल फोर्स टू ओपोज दैट रेजिस्टेंस फोर्स, जो रेजिस्टिव फोर्सेस आपके आर बाहर काम कर रही हैं, उनके लिए जितना फ्रिक्शनल फोर्स आप लगा रहे हो इट डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर रेजिस्टिव फोर्स. जितना ज्यादा रेजिस्टिव फोर्स का वेलोसिटी होगा उतना ही ज्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा. आई कैन गिव यू वन मोर एग्जांपल ओवर हियर. सपोज वी आर ड्राइविंग अ कार, राइट. जितना ज्यादा कार का स्पीड होता है बच्चे, ब्रेक भी उतना ही जोर से अप्लाई करना पड़ता है उसको रोकने के लिए, क्योंकि आपको फ्रिक्शनल फोर्स उतना ज्यादा अप्लाई करना है. मोर विल बी द वेलोसिटी, मोर विल बी द फ्रिक्शनल फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द कार. सो सेम थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट ओवर हियर. द नेक्स्ट थिंग इज as a result the energy of vibrating body continuously dissipates. आप जितना ज्यादा frictional force के लिए अपनी एनर्जी को यूज कर रहे हो, that means the energy of the body is dissipates, means it decreases, it goes less in doing work against the force of friction, and so its amplitude gradually decreases. If the energy continuously dissipates, तो आपका जो amplitude है वो भी क्या हुआ, gradually decreases, and maybe it will become zero. A time will come when vibrations will not be there and the motion of the body will be ceased. Now when we are talking about all this scenario, we need to learn one more thing, that the rate at which the energy is lost to the surroundings, that depends on what, जिस रेट पर आपका एनर्जी लॉस हो रहा है वो कब कम होगा या कब ज्यादा होगा, that depends on two things. One, it depends on the nature of the medium. Nature of the medium means you can talk about the viscosity of the medium or the density of medium. I believe you are able to understand. Density of medium, जो जितनी ज्यादा dense चीजें हैं उसके अंदर साउंड की स्पीड अलग तरीके से ट्रैवल करती है. थिक लिक्विड्स में जो ज्यादा विस्कस होते हैं उसमें अलग स्पीड से ट्रैवल करती है, जिनकी विस्कोसिटी कम करती है, the speed of sound is different in that. So according to that it depends on nature of medium, and second it depends on the shape and size of vibrating body. Whatever is the shape and size of the vibrating body, it depends on that only. Means at what rate energy is dissipating in the medium, कितने रेट से एनर्जी हमारा मीडियम में लॉस हो रहा है, that depends on these two. Nature of medium, it depends on the viscosity and density, and it depends on the shape and size of the vibrating body. We need not to go in detail as per our syllabus की nature पर कैसे depend करता है and shape and size पर कैसे करता है, that will study in higher classes. Okay, and to write down the example of damped vibration, you can write down any example of vibrating body in your surrounding areas. Like you are talking about playing sitar, definitely that is the example of damped vibration, because sitar you are playing in the medium, air molecules are present over there, so after some time the string of the sitar that comes to rest, so that becomes the damped vibration. When you are plucking leaves, or when you are talking about oscillation of pendulum, after some time all these things their vibration ceases and they are known as damped vibrations. Right beta? Now we are studying what the differences between natural and damped vibration, because we have done about both of these and now we will be talking about these two. To start with differences between natural and damped vibration, we will take our first point, that is amplitude. Amplitude during the natural vibrations, that will remain constant,
and amplitude in damped vibration that gradually decreases because of the presence of resistive force. Just now we studied about that. The second one is there is no loss of energy because vacuum is present there, no resistive force is there, no medium is there, that means no loss of energy. No other energy loss will be there to overcome that resistive force. So the energy of that particular vibrating body, that will remain same, and that's why only the amplitude also remains same. But in case of damped vibration, there is loss of energy, and this loss of energy is due to the presence of resistive force, because body has to overcome that resistive force, and for that the body has to use its energy. So there is loss of energy, and generally this loss of energy is in the form of heat energy. Okay. Third one, only resistive forces are acting in case of natural vibrations, I told you just now, and in case of damped vibrations, along with the resistive restoring forces, only resistive forces are acting. Sorry, I spoke wrong over here. Only restoring forces are acting in the natural vibrations, and in damped, along with the restoring force, resistive forces are also acting. Restoring force is a kind of force which brings the body back in equilibrium. Remember it. Okay. Fourth one is frequency in case of natural vibration, that depends on the shape and size of the body. It depends on shape and size of body, and it will remain constant throughout the motion. But in case of damped vibration, frequency of the vibrating body, that becomes less as compared to the natural frequency, and this decrease in the frequency of vibrating body, it depends on the damping force, or it depends on the resistive forces present around the body. This is the basic difference between your natural vibration and damped vibrations. Hope you are able to do these two topics now very well. Please do all the questions related to this natural and damped vibrations from your book exercises. If you have any problem, you can talk to me. Thank you.